So today we will go into the 2025 tobacco tax overall that have been recently been made. And this video is presented by CouncilWise, which is India's foremost AI legal research platform with 1 lakh plus judgments and have AI powered legal research. So a major shift in India's tobacco taxation system have been did. So two new bills have been introduced and it reshapes the taxation of cigarettes, pan masalas and gutka in India. So it will be replacing the expiring GST compensation cess. जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस था वो एक्सपायर होने को आ रहा था सो दिस न्यू टू टैक्स वुड बी रिप्लेसिंग द जीएसटी कंपेंसेशन सेस। जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या होता है तो जब भी कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को सेस मिलता है नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स दिस सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स सो वो अब एक्सपायर होने को आ रहा था सो this replacement was necessary and this creates a permanent capacity linked tax structure. Now if we say why this change was needed, so as I said the GST compensation cess 2017 वाला जो था वो टेम्पररी था एंड एंडिंग एट वुड शार्पली रिड्यूस द प्रोडक्ट प्राइसेस। तो वो जो सेस के कारण क्या होता था प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस होती थी जो ये सेम प्रोडक्ट्स थे उसकी प्राइस बढ़ जाती थी। नाउ जो ये एंड हो जाता तो उसके बाद प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाते एंड गवर्नमेंट रिस्क रेवेन्यू लॉस एंड पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट। मतलब अगर अगर प्राइसेस कम हो जाती तो रेवेन्यू लॉस भी होता एंड पब्लिक हेल्थ को भी इम्पैक्ट होता। So the solution was to shift to a permanent excise based system. So now this a new bill that is Central Excise Amendment Bill 2025 have been introduced. So to move back taxation back under the central excise. मतलब कैसा हो रहा था जैसे मैंने बताया दैट जीएसएस क्या करता था वो सेंटर को जाता था बट ये रीडिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट्स। सो नाउ विद दिस सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 जो पूरा टोबैको का टैक्सेशन होता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल एक्साइज में चला जाएगा। दिस शिफ्ट फ्रॉम द एड वैलोरम टू द स्पेसिफिक ड्यूटी। ये क्या है सो एड वैलोरम क्या कि जब भी कोई भी वैल्यू एडिशन होती है वही वो सेस आता है। नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक ड्यूटी सो देयर वुड बी अ टैक्स 1000 sticks per unit इंडिपेंडेंट ऑफ द रिटेल प्राइस। मतलब रिटेल में कुछ भी बिके मैन्युफैक्चरिंग में सेस कब लगेगा कि 1000 डब्बे बने 1000 वो स्टिक्स बनाए सिगरेट की तो उस पे ही डायरेक्ट सेस लगना शुरू हो जाएगा। सो नाउ दिस इज अ न्यू शिफ्ट दैट इज अकरिंग के एड वैलोरम की जगह पे अब स्पेसिफिक ड्यूटी पे ही डायरेक्ट सेस लगना शुरू हो जाएगा। सो इंडिकेटर एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है सो स्मॉल सिगरेट अगर देखें तो स्मॉल सिगरेट में 2700 पर 1000 स्टिक्स आपने जैसे बात की 1000 स्टिक्स का जो भी होता है उसमें 2700 मिल जाए 2700 रुपीज का सेस लगेगा। फिर अगर लार्जर सिगरेट्स की बात करें so it would be around rupees 4500 to rupees 5200 per 1006 and अगर unmanufactured tobacco की बात करें तो it would be 60 to 70% of the effective duty। एंड अगर सेकंड बिल की जो अगर बात करें तो हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेंस बिल 2025 तो ये क्या करेगा न्यू सेंस एप्लीकेबल इनिशियली टू पान मसाला एंड गुटखा। तो ये जो बिल है ये जो सेंस है वो सिर्फ पान मसाला एंड गुटखा पे लगेगा। there may be future expansion may be possible also access taxation to the machine capacity based assessment। अब ये machine capacity based assessment क्या होता है so now capacity based taxation का logic क्या था so tax based on manufacturing capacity and not on the declared production so it prevents under reporting। तो ये क्या है कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसकी 500 kgs पर डे कैपेसिटी है तो उसमें फुल 500 kg इवन इफ 100 kg रिपोर्टेड मतलब अगर सिर्फ 100 kg प्रोडक्शन किया तो उस पे कोई सेस नहीं है। It would be based on the manufacturing capacity and not on the declared production के कितना प्रोडक्शन किया उस पे सेस नहीं लगेगा। सो दिस एक्सपेक्टेड इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या होगा सो इसका पूरा ये दो बिल जो आएंगे उससे पूरा इम्पैक्ट क्या होगा तो फर्स्ट वुड बी द हायर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी होगा उसमें हायर कंप्लायंस बढ़ जाएंगी कंप्लायंस का जो कॉस्ट बढ़ जाएगा। सेकंड वुड बी राइज इन द प्रोडक्शन एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब जैसे हमने देखा क्या कैपेसिटी बेस्ड हो जाएगा तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा सो इट वुड लिंक टू द rise in the production and the operating cost. Third would be possible market consolidation. So as we discussed right now कि जो अब होगा वो प्रोडक्शन पे नहीं जो मार्केट जो यूटिलाइजेशन मतलब पूरी जो उसके मशीन की कैपेसिटी होगी उस पे सेस लगेगा। तो देयर वुड बी अ पॉसिबल कंसोलिडेशन ऑफ सो मेनी फर्म्स सो मेनी कंपनीज के पहले जो प्रोडक्शन करते थे उस पे सेस लगता था बट एज नाउ इट वुड बी शिफ्टेड टू द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो शायद पॉसिबल मार्केट कंसोलिडेशन शायद बढ़ जाए। फोर्थ वुड बी द हायर रिटेल प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। मतलब जब भी सेस आएगा सेस प्राइसेस बढ़ाएगा सो हायर रिटेल प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। नाउ इम्पैक्ट ऑन द सेंटर स्टेट डायनामिक्स। सो एज वी से दैट पहले जो सेस था जो अपना जीएसटी कंपेंसेशन सेस था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बट नाउ द सेस रेवेन्यू विल गो entirely to the center and states may raise concerns about the loss of previous compensation। तो पहले जो जीएसटी में कंपेंसेशन सेस मिलता था वो स्टेट्स के पास से चला जाएगा सो शायद स्टेट्स थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट करें एंड इट विल ऐड political and the fiscal friction। So
the larger message of the government is very clear. So government will not allow harmful products to become cheaper. कि जो ये सेम प्रोडक्ट्स है उसको गवर्नमेंट चीप नहीं होने देंगे. सेकंड थिंग वुड बी द परमानेंट मॉडल एंश्योर्स द प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू. गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि जो परमानेंट मॉडल है मतलब एक थाउजेंड दो जो 1006 वाला था या फिर जो अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का वाला जो मॉडल है वो permanent model and it will ensure the predictable revenue in the future. Third is the tax structure is now aligned with the health and the national security objectives. So this was a whole picture about the new tobacco bills that have been introduced and council wise is hosting opportunities for finance professionals in state of world webinar on 5th of December. So you can register that on the in the link given in the description and it will be held by CA Mehul Shah and it is done in the collaboration of ICOMAX. So